should be the question. Like, why should we study React? First of all, that's the point. And like, once we know it, like how to develop things. So just one question, like, you guys have started React, right? Like, I hope at least like you guys can like create project and uh, at least like set up the project itself. I hope you are clear on that. Anyways, we'll start with a new React project, okay, and we'll build a step by step and cover everything related to that. So, like there will be 3 to 4 classes now for React. Like introduction part is already done, so we'll try to cover as many things as possible. And if you have any doubt, like please feel free to ask. Okay, so give me a minute. I will share my screen and then I guess we can get started. Okay, starting with the setup. Okay, let's see how it is, how it works, and how are we going to connect things. Okay, so I will create a new folder. Okay, so let's say where are the documents? Here we have the documents. Okay, so we'll create a new folder and let's name it. So suppose we want to design something as a e-commerce. Okay, now how are we going to deal with that? Let's try that part. Or I already have an API. Okay, anyways, we'll see this. What we are going to create. I will just open this folder. Okay. Also, let me connect this also. Okay. So in order to do a React app setup, I will quickly open a terminal. Okay. Now, just like backend, when we did npm init and we were creating the packages and then we were creating the index file and then we were setting the directory. ठीक है? So this was the way हमने backend में करा था, right? Now React says we have a execute command जो कि हमें एक template देगा, ठीक है? So we call it a create React app template, ठीक है? CRA template बोलते हैं उसको, and it will make some file for us, ठीक है? So हमें अलग से file नहीं बनानी पड़ती, तो I can just quickly do the setup and I can say, let's say, e-store or something kind of, if you want, whatever name you can just give it, ठीक है? So अच्छा, different packages was also installed in um, Node.js, ठीक है? Backend के लिए हमने different packages भी install करे थे, so different packages were performing different functionalities, ठीक है? उनके बेस पे वो वर्क कर रहा था, and those were basically called dependency in our packages, ठीक है? So why we call it dependency? Because our project depends on that, ठीक है? So हमारी project तभी work करेगी if we have those folders, ठीक है? So the idea is we'll start with this React app, okay, and we'll try to create something like a store, okay. Also, I have an API. I guess we can use this API. The API is basically movies database API, okay, and I can go to here. So how to use a API doc? Okay, so that is one more question. I will share the link with you guys. Okay, you can also try. Now, let me get back. Okay.
So this website is the movie database API. Okay, so if you open it, you have to do a sign up. Okay, sign up करना पड़ेगा to get the auth key, and once you have the auth key, you can just continue with the things. ठीक है. So where to hit? Let's set up our application. I will hit authentication and get the API key. Okay. Acha. Okay, let's come to this in a minute. But before, when we have our React app setup, ठीक है, so ये सारी files हमें मिलती हैं. Now these files we are already familiar with package JSON, package log JSON. We are already familiar with the node modules. ठीक है, public folder. So we already discussed that there is an index HTML, and this is the only index file in our complete React app. Now, React app makes our application totally on JavaScript. Okay. So, if you say how is that possible, so we already have seen DOM in JavaScript, right? So we can do create element and all those kind of things. So internally React does the same thing. Okay. So JavaScript की help से app create कर रहे हैं. So all the elements you see here is created using JavaScript itself. ठीक है. Now, in order to make our life easier, we have tags just like HTML. ये HTML like tags हैं, but these are not HTML tags. ठीक है. इस div का sense है कि create element div. ठीक है. So that is what it means. So ये जो small div you are seeing these tags. If you see this is a function. ये एक JavaScript function है. तो how is it possible to write HTML inside it? Because this is not HTML. ठीक है. ये जो div है, so this is not HTML. What we call this, guys? क्या बोलते हैं इसको? What is this basic syntax? We call it JavaScript XML, right? JSX in React. Okay, so JSX you have like heard in the documentation of React also. कि what is JSX? So that is what JSX is. ठीक है, so ये HTML जैसा दिखता है, but that is not HTML. ठीक है. Okay. So this is what we are following, and this is the official documentation. So you can just go through it. It won't take more than like 2 weeks, 2 to 3 weeks, and we already have the things over here. Okay, so JSX we already covered. Okay, so this is JSX. This looks like HTML, but it is not HTML. It is internally वही syntax है, create element h1 and set attribute, get attribute. So these are all possible with JavaScript. जब हमने DOM पढ़ा था, like we saw this also. ठीक है. Now the same thing is done over here. Now these curly braces you see, so this curly braces you see, when you put this curly braces, you can write any JavaScript code inside this. ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी code लिख सकते हो, so you can write whatever you want here. ठीक है, that should make sense. Like I can write 2 plus 2 also, 2 plus 1, 2 plus 2, whatever I want I can write. Okay. So ये JavaScript code ही है, and if you want to write any um, JavaScript between them, you have to just put curly braces. ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर JavaScript लिखना है तो I'll just remove this because we do not need this at all. Okay, so this is of no use to us. I will remove this. Also, there are some files which we do not need. ठीक है. React talks about component based application. Component based application मतलब कि if you want to develop your nav bar, you can develop it separately. If you want to make your page, let's say the main page, you can make it separately. So you do not have to combine that in a single file. Unlike HTML, HTML में आपको सारी चीज़ें एक ही जगह लिखनी होंगी, right? So that is one advantage React has with us. ठीक है? So we do not need to write all codes at same place. ठीक है? I hope import is similar to a require we had in Node.js. ठीक है, so Node.js में require था for dependencies. यहाँ पे हमारे पास import है. There is no difference in that. ठीक है, ES5 और ES6 का difference है. So this is new JavaScript logic. ठीक है, we do import. Now, this React DOM is basically taking our JSX code and converting it to HTML. ठीक है, HTML basically इसको HTML में convert करने का काम
React DOM का है. Now, if I have a look at my React app, I have nothing but this syntax. Sorry, this text. Nothing else but this text. ठीक है. So there is a function. इसके अंदर मैंने लिखा है create element document dot create element div, and inside the div dot inner text equals to app. So that is the complete JavaScript code. उसको मैंने short form में मैं ऐसे लिख सकता हूँ. So this is JSX benefit of having JSX. If I quickly start my application, but before this I need to switch to um, the folder. Now if I quickly start my application, I will see this only single text. इसके अंदर app हुआ. And I'm more interested in seeing the HTML. ठीक है? कि what is the HTML basically? It says error in, obviously there is error because I have deleted the files. Okay, so I do not need this one. I do not need this complete code. Let's forget this for now. Not needed as of now. And yes, I guess that's it. Okay. So I can see that I have only app over here. Now, if I just have a look at the HTML code, I see this div and app over here. And this is head, no script, div id is equals to root, and all these are here. Now where did we see this div id? So you'll say, sir, where this div id is with id equals to root? It is inside. It is inside the public folder. Okay, so this is the public folder, and this is the div. Whatever app will we make in React is get added between these two divs. ठीक है. So जो भी app हमारा render होगा React app, that will be added between this two div, which is inside public index HTML. ठीक है. So this is the basic logic. We have to write a JavaScript code. ठीक है. But in order to help us, we have JSX, and that is what the complete logic behind the React is. Is this part clear, guys? I guess this is a very basic introduction of React, but yeah, that's the reality behind React. Okay, now I'm saying to you guys is we create component based application. Component based application means instead of having all, so when we write our HTML code, we have everything inside the same file. Navbar is there, then we have main section, then we have, let's say, header section is also there, then we have our main section, aside section, then we have our footer. Okay, so we can just divide our complete application in different components. Okay, so different components. Let me rename this to JavaScript. Either I can put a JS extension क्योंकि that is at the end JavaScript, या फिर you can put a JSX. ठीक है, JSX in like JavaScript React. ठीक है, so it's the same thing. ठीक है, no difference. Also, I will create one more file. So this is navbar, and I will create a main JSX where I will have my main code. Okay. If I want to have more components, I can have more components. So I do not have anything as of now, but let it be. I will see what we need to do next. Okay, so going by the documentation, what is necessary? Let's see that first. So it says that embedding JavaScript expression. So we are going to do that a lot of times. So don't worry about this. Rest is okay. So we do not see anything which is unfamiliar to us. We already know key function कैसे काम करता है. We already know how object works. The only new thing is JSX over here. Okay. Uh, what else? Okay. Yeah. सो वॉट आई वाज सेइंग, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है लाइक कॉन्स्ट एलिमेंट h1 टैग है, हेडिंग वन टैग जिसमें क्लास नेम, अच्छा क्लास नहीं है, दिस इज क्लास नेम. ठीक है, बिकॉज क्लास अगर लिखेंगे तो देर विल बी कन्फ्यूजन. क्यों कन्फ्यूजन होगा? बिकॉज क्लास इज इन जावास्क्रिप्ट इज ओरिजिनल दैट क्लास. ठीक है, वो क्लास क्लास समझ लेगा उसको. सो वी कैनॉट राइट id क्लास इनसाइड द एट्रीब्यूट.
because that will be the same thing. The confusion over. So we write class as class name. Okay. Now after this code is as good as this one. Okay. या तो आप ये लिखो, otherwise you write this react dot create element h1 tag, which property class name is greeting, and the string inside is, or the child inside is hello world. That's it. So yeah, like this is what we have. Acha. Rendering elements. Okay, so you see this we already discussed. ठीक है, ये हमने already discuss करा कि divide root में ही सारी चीज़ें जाती हैं, और React DOM it inserts inserts all the elements inside the root. ठीक है, updating the render element and all those kind of things. ठीक है, so यहाँ पर भी है. So we have this. It says React only update what's necessary. ठीक है, only updates what is necessary. So instead of updating the complete component, जैसे ये timer लगा हुआ, ठीक है, we'll develop this also. So जैसे timer लगा हुआ, so basically this is updating only the time. इसको बाकी टैग से मतलब नहीं है. The same thing is happening. So ये कैसे करता है? So what we call this as a DOM tree. ठीक है, सो जो प्रीवियस डॉम ट्री है और जो अभी की डॉम ट्री है, दोनों को कंपेयर करता है. ठीक है, और डिफरेंस निकालता है. सो द डिफरेंस इज ओनली इन दिस टेक्स्ट. सो सिर्फ टेक्स्ट चेंज होता है जहाँ पे डिफरेंस है. सो कंप्लीट एप्लीकेशन, कंप्लीट पेज रिलोड नहीं होगा. ठीक है. Component and props. Component let you split UI into independent reusable pieces and think about each piece in isolation. The page provides an introduction to the idea of components. You can find detailed component API reference here. Now, component let's split the UI. जो UI है उसको split करता है. तो this is all we are already going to do. ठीक है, हमने already component folder बनाया है और हम अलग अलग चीज़ों को डेवलप करेंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. एंड रीयूजेबल है. द बेस्ट थिंग इज रीयूजेबल. आप एचटीएमएल कोड को रीयूज नहीं कर सकते, राइट? सो इफ देर इज अनदर पेज यू नीड टू राइट अनदर एचटीएमएल, there is no way you can use a previous form, navbar, and anything else. So this is what the meaning of this line is. Rest is the same story which was in the last page. ठीक है, how it works, ठीक है, we'll see. Don't worry. अच्छा, um, let's try to develop something. ठीक है, and I have this movie database UI. So movie database UI. Okay, so API. Okay, so this is what we have. Now this is the main file. I guess. Okay, let me log in. Okay. You can just create your account here. Okay. I will share the URL with you guys. Okay. Just search this and you will be good to go. Okay, I probably have my API key somewhere. Okay, where is it? Yeah. So if I go to API, okay. So these are the functionality it has, right? So it says general features, so we can get list of. So this movie database provides all the movies we can see, right? And so this is what we have. So how it works, how it will be working, how we'll get the movies, we'll see it. So before that, you have to just register over here, and this one. I guess I need the API key. Okay, where is it? Let me find it out. I guess I had somewhere the API keys too. Okay.
Okay, give me a minute. I guess it should be सर मोर पे है, मोर पे सपोर्ट पे है वहाँ पे। on the support. नहीं नहीं एपीआई पे वहाँ पे भी सर। Oh, like ये पूरा ही डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है. I'm searching for the key. कहीं तो रखी थी. Like I have in the profile or somewhere else. Okay. Why I'm not able to click over here? Okay, let me go over here. I guess I should find. Okay, so this is the result like we get from the API. Okay, so we can try to build something like this. Okay, see this? We have all the information, and this is regularly updated. Okay, regular update भी होता है. So we have good API over here. Okay, so and yeah, so they have also applied. I guess what we say infinite scrolling. Okay, you can see this also. But let me find the key itself. Why is this not allowing me? Okay, so here is my API key. Okay, I will copy this and let me make this sample request. Okay, so if we see this sample request, we have something as the home page and something. Okay, I already have this movie name and all those things here. Okay, so how we are going to do this? We'll check it out. Okay. Although I use it somewhere, let me find that complete API itself. Give me a minute. I'll just quickly get it. Not here, I suppose. It was here somewhere. I just need the text. Okay. Okay, so we'll study about this also. The Redux part. Okay. And I guess, yes, it is here. Here we have. Okay, I will copy this line itself. Okay, and let's make it over here. We'll see this. Okay. So the point is, how do we create our UI first of all? Okay. So for that also we have two ways. This we call JSX element. ठीक है, so इसको JSX element बोलते हैं. ठीक है, and this complete is called as what we call this. We call the complete as component. ठीक है, so इसको component बोलते हैं and this is called as JSX element. Now if I see, I have the functional component which we already saw. We have something called as class component also. ठीक है, we have something called as class component. Class component कैसे function करता है? Now as class the name suggests, it has its own data members and member function. ठीक है, so इसके खुद के data members और member function होंगे. I'll just quickly close this one. Okay, so it has its own data member and member functions. ठीक है, what do we mean by that? Now if I want to create, if I want to get the response from this one, what I have to do is, let's go to the documentation again. So rendering a component, so this is easy. We won't see this anything else. Composing components मतलब कि एक से ज़्यादा component को एक जगह पे रख सकते हैं and we can reuse it. So you can see that we are using the component, same component with the different values. कैसे करेंगे वो भी देखते हैं. Extracting, ठीक है, like the similar thing we have over here. ठीक है. Okay, we'll see what do we mean by props are read only.
Next part and very important thing, whenever we study React, there are three things. Okay. First is life cycle of a React component. Okay. Life cycle of a React component. Now, what is a life cycle? So, whenever our code is mounted, code mount होना मतलब कि जो भी JSX code हम यहाँ पे लिख रहे हैं, let's say I am creating a div and I'm creating something heading over here. I make it the movie store. Okay. So whenever there is first rendering, okay. So whenever there is a first rendering, we call it mounting. First rendering मतलब कि JSX code HTML code में convert होता है, so that is called as mounting. ठीक है. So this is the first phase of. So this is the first phase of life cycle of a component. ठीक है. So ये पहला phase होता है mounting. Now whenever there is some change, ठीक है, there is some change. When we hit enter, see the app is refreshing just like nodemon update करता था, तो we have the change. Now this is re-rendering. ठीक है. तो ये अपडेटिंग फेज है. ठीक है. सो दिस इज अपडेटिंग फेज. सो एक तो है माउंटिंग फेज, जब पहली बार ऐप HTML में कन्वर्ट होता है. ठीक है. एंड वी सी इन द ब्राउजर. सेकंड पार्ट जब वो अपडेट होता है. ठीक है. सो दैट इज अपडेटिंग फेज. एंड देयर इज अ लास्ट फेज जब ये कंपोनेंट जो है वो अनमाउंट होगा. ठीक है. अनमाउंट होगा. ओके. सो अनमाउंटिंग मीन्स वी. ओके, विल दिस वर्क? Okay. Yeah, this is also working. So we have nothing over here. It means that key that component is not anymore in the browser. So ये unmounting phase है. ठीक है. So there are three phases: mounting, updating, unmounting. ठीक है. So this is what life cycle of a React component is. सबसे पहले mount होता है. फिर if any change is there, then there is updating, and there is a unmounting. Converting a function to a class. ठीक है. Now, but there is some other things we need to discuss. जैसे ही फंक्शन था तो फंक्शन में वी हैड ओनली JSX कोड, हम वहाँ पे डायरेक्टली div वगैरह लिख सकते थे. ठीक है. बट क्लास कंपोनेंट में ऐसा नहीं है. इफ यू लुक एट द क्लास कंपोनेंट, देयर इज ऑलरेडी अ प्री डिफाइंड मेथड जिसका नाम है रेंडर. द पॉइंट इज दिस रेंडर मेथड. ओके, सो वी ऑलवेज हैव अ रेंडर मेथड इन क्लास, बिकॉज हम क्लास से डायरेक्टली कुछ रिटर्न नहीं कर सकते. फंक्शन से वी कैन रिटर्न डायरेक्टली. ठीक है. अगर मैं फंक्शन देखूं. ठीक है. सो फंक्शन, either you have this function or you have like, let's say any arrow function, it doesn't matter. ठीक है. मतलब आप ये भी फंक्शन रख सकते हो if you want. So you can have a arrow function. Let's remove this. You see this, like we can have this also. ठीक है. So this is also a valid functional component, जो कि एक arrow function है जिसका काम है जब भी मैं इस ऐप को कॉल करूं, इट विल रिटर्न दिस div टू मी. ठीक है. ओके, लेट मी शो यू. सो लेट आई विल नेम इट ऐप टू. ठीक है. और आई विल से आई एम ऐप टू. ठीक है. सो देर आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. एक है क्लास कंपोनेंट और एक है फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि एरो फंक्शन जैसा है. ठीक है. एंड इट इज रिटर्निंग. एंड वी नो दैट कि एरो फंक्शन अगर सिंगल लाइन है तो हमें रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. वी कैन जस्ट डायरेक्टली रिटर्न दिस div. So we can directly return this div. Okay. This is a functional component. Now, where is this props coming? There is this, that is a different part of discussion. But how do we attach two of them? दो components को कैसे add करते हैं? So you can just simply say app two, and however you write HTML syntax, HTML element, can similarly write this also. ठीक है. तो ये app two यहाँ पे app two हमने लिख दिया, and we can see that is also being written. See this. So this is first component. This is second component. Everything is going inside the root itself. ठीक है. वो root के अंदर ही आ रहा है. So this is the div we are returning from this app two. ठीक है. I will just quickly delete this.
तो फंक्शनल कंपोनेंट काफी सिंपल, कोई मेथड नहीं, बट क्लास कंपोनेंट से आप डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, तो वी हैव अ रेंडर मेथड which return this for us. Okay. First difference, it says app2 is not defined. Obviously it is not defined, we have deleted that, तो इसको भी remove कर देते हैं. Do you have any doubts still here, guys? Any doubts between functional class component? Okay, so we'll go to detail later, but अभी तक कोई doubt है? Okay. Understand this as we are combining two three JavaScript file and each JavaScript file के अंदर create element का कोड लिखा हुआ है कि ये div बना के देगा, ये h1 बना के देगा, ये navbar बना के देगा. Okay, and this is possible using JavaScript also. ठीक है, वो हम already DOM से कर सकते हैं, but we have a nice library for that, what we are using React. नेक्स्ट पार्ट, एक तो हो गया रेंडर मेथड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल कंपोनेंट. ठीक है, सो कन्वर्टिंग अ फंक्शन टू क्लास, क्या लिखा हुआ देख लेते हैं. सो क्रिएट अ ES6 क्लास. ठीक है, एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट. ठीक है, तो एक्सटेंड मतलब कि इनहेरिटेंस. ठीक है, इनहेरिटेंस कर रहा है. ओके, add a single empty method render, we already know this. Move the body of function into render. ठीक है, रिप्लेस प्रॉप्स विद दिस डॉट प्रॉप्स. ठीक है, सो दिस कहाँ से आया वो भी देखेंगे. ठीक है, डिलीट द रिमेनिंग एम्प्टी. ठीक है, मतलब हो गया. नेक्स्ट पार्ट, एडिंग लोकल स्टेट टू अ क्लास. लोकल स्टेट, ओके, वी ऑलरेडी नो अबाउट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. तो जो डेटा मेंबर्स हैं कैसे ऐड करेंगे उनको, ऑलरेडी नो दिस थिंग, राइट. सो हाउ डू वी से डेटा मेंबर, वी से समथिंग लाइक, उससे पहले वी नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्टर. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, जब आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हो और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, तो उसके कंस्ट्रक्टर को आपको पहले कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, सो आपको अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा. टू पास props over here or it will work. Okay, let's see this. ठीक है, so सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर चाहिए क्लास में, एंड दिस इज व्हाट वी. ओके, is it fine, right? Hope it's fine. Okay, so why super? Remember inheritance, you have to initialize the parent class constructor also. This is why we'll call super. Next part, for local variable, we have a special variable. ठीक है, for setting up local variable data members के लिए हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसको हम स्टेट बोलते हैं. एंड स्टेट इज नन अदर देन की वैल्यू पेयर्स, यानी कि नन अदर देन ऑब्जेक्ट, of which everything in JavaScript is object itself. ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट ही है. फंक्शन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑब्वियसली एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट. दिस डॉट स्टेट भी एक ऑब्जेक्ट है एंड वर्किंग लाइक अ डेटा मेंबर, जैसा हमने मेंबर फंक्शन से और डेटा मेंबर देखा. द पॉइंट हेयर इज, व्हाई डू वी नीड अ स्टेट. स्टेट क्यों चाहिए ये भी पता चलेगा. लाइक इफ यू आर सेइंग दैट कि कोई वेरिएबल चाहिए, तो वो तो हम लेट कॉन्स्ट से भी लिख सकते हैं, राइट. व्हाई डू वी नीड स्टेट. इट सेज एडिंग लोकल स्टेट टू अ क्लास. लेट्स सी व्हाट आर देयर आर्गुमेंट्स. क्या आर्गुमेंट है इनका. ये कह रहे हैं कि ऐड अ क्लास कंस्ट्रक्टर. ठीक है, असाइन द इनिशियल दिस डॉट स्टेट. ठीक है, ये तो हो गया. नाउ वी हैव पास. ओके, प्रॉप्स विल कम लेटर, डोंट वरी. एंड वी हैव समथिंग समथिंग. ठीक है, रूट डॉट रेंडर. ठीक है, दैट इज ऑलरेडी हैंडल्ड. ओके, आई गेस दे हैव ओनली दिस वन. सो कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा क्लास में. ठीक है, व्हेनेवर यू क्रिएट अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, और उसके अंदर लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट. व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज अ स्टेट, व्हाट इज अ स्टेट. नाउ इफ आई हैव अ केयरफुल व्यू. ठीक है, इफ आई हैव अ केयरफुल व्यू, वेयर वाज द लिस्ट वी वर सीइंग. एक लिस्ट थी हमारे पास. लेट मी गो बैक टू द अकाउंट.
Okay, if I see this application now, okay, if I see this application, let me do a quick refresh. So this application has a limited number of movies in the UI. ठीक है, अभी limited number of movies हैं, ज़्यादा movies नहीं है, ठीक है. But when I scroll, ठीक है, when I scroll and I say, let's say, like sorry, load more or something. So ठीक है, and I keep on scrolling and it keeps on increasing, ठीक है. So indirectly we are changing the state of our application. State मतलब कि whatever be the current scenario, ठीक है. So currently क्या है UI में, हम उसको चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ यूजर ट्रिगर. यूजर ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, स्क्रॉल हो सकता है, क्लिक हो सकता है, मतलब यू वी ऑलरेडी नो अबाउट जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, राइट. जो भी इवेंट्स में पॉसिबल है वो सारे के सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं, एंड विल एवरी ट्रिगर हैज़ अ कैपेबिलिटी टू चेंज द स्टेट. ठीक है, ऐप की स्टेट यही होती है कि वॉट एवर इज द करंट यूआई, उस यूआई को छोड़ के वो कोई और यूआई एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, यू सी दिस, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, ये इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड समथिंग समथिंग. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस. सो इसी को स्टेट बोलते हैं. नाउ हाउ डू वी मैनेज द स्टेट. स्टेट मैनेज करने के लिए हमारे पास 6-7 वेरिएबल्स हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं. लाइक लेट्स से यू हैव अ काउंटर की इनिशियली 10 कार्ड्स दिखाएंगे और जैसे ही यूज़र स्क्रॉल करेगा तो और कार्ड्स इंक्रीज करेगा. तो कुछ ऐसा काउंटर लगाओ, या फिर जैसे ही यूज़र स्क्रॉल करेगा वैसे ही एपीआई कॉल करेंगे. तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ लगी हुई. तो यूजिंग डॉम वी आर चेंजिंग द स्टेट. ठीक है, तो ये वही स्टेट है. तो इनिशियल स्टेट इनिशियल वेरिएबल हो. व्हाट डू वी मीन बाय दैट. सो अगर मुझे हेडिंग ये रखनी है, ठीक है, अगर मैं हेडिंग ये रखना चाहता हूँ कि लेट द इनिशियल हेडिंग बी द मूवी स्टोर. ठीक है, द मूवी स्टोर बी द इनिशियल हेडिंग ऑफ माई एप्लीकेशन. ठीक है, तो इसको मैं कैसे वर्क करूँगा. नाउ वी ऑलरेडी हैव सीन दैट कि किसी भी JSX कोड के अंदर हम करली ब्रेसेस में कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. ठीक है, अगर मैं दिस डॉट स्टेट डॉट हेडिंग लिखूंगा तो मुझे हेडिंग मिल जाएगी. ठीक है, तो यू विल से सर स्ट्रिंग लिखने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं. तो विल सी, लाइक व्हाट इज द पॉइंट लाइक, फिर ये तो HTML से ही हो जाता. वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, HTML से तो हो ही जाता. द क्वेश्चन कम्स, आई वॉन्ट टू मेक इट यूजर बेस्ड हेडिंग. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूजर बेस्ड हेडिंग हो, लाइक यूजर इनपुट कर सके, एडिट कर सके हेडिंग. सो कुछ इस तरह का पेज का हेडिंग, या फिर डायनामिक हो. ठीक है, कि कोई नेटवर्क कॉल हुई तो कुछ और हेडिंग था, लॉगिन हो गया तो कुछ और हेडिंग है, ऐसा ऐसा कुछ हो. ठीक है, सो ऐसी कोई कंडीशन हो कि लॉगिन होने के बाद चेंज हो गया, या फिर कोई यूज़र इनपुट पे चेंज हो गया. सो दैट सम लाइक दैट थिंग वी कैन. ओके, लेट डू अ ट्रिगर. एक ट्रिगर करते हैं. सो ट्रिगर करने के लिए यूज़र से हेडिंग लेते हैं. ठीक है, लेट्स टेक द हेडिंग फ्रॉम यूज़र. सो हेडिंग लेने के लिए ऑब्वियसली हमें इनपुट टैग चाहिए होगा. सो इनपुट टाइप टाइप टेक्स्ट. ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट. अच्छा, नाउ you will be that is a more of a thing कि you will be going to know that कि स्टेट हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे थे, हमें पता नहीं था. फिर आप कहोगे सर HTML तो इतने दिन से पढ़ा है, ऐसा तो कुछ सुना नहीं. द पॉइंट इज कि वेन एवर यू राइट अ फॉर्म, ठीक है, जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो, ठीक है, सो यू फिल अप टॉप टू बॉटम एवरीथिंग. ठीक है, सो आप सारी चीज़ें फिल करते हो. लेट्स से देयर आर 10 कॉलम्स यू हैव फिल्ड. जब आप API रिक्वेस्ट करते हो तो वो की वैल्यू पेयर्स में जाता है, एंड दैट इज द नेम एंड वैल्यू ऑफ योर इनपुट. ठीक है, सो हैव यू एवर थॉट कि वो ऑब्जेक्ट कब बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, लाइक वो की वैल्यू कैसे बन रही है और कैसे जा रही है. इट मीन्स कि इंटरनली HTML एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है की वैल्यू पेयर्स का. जब भी आप फॉर्म फिल करके पोस्ट करते हो फॉर्म को, तो दैट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड बाय HTML itself. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट.
जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो बैकएंड पे नेम और वैल्यू ज़्यादा ही होती है। इट मीन्स दैट कि HTML हैज़ डिजाइंड द थिंग फॉर यू, नेम और वैल्यू, नेम वैल्यू वट एवर बी द फॉर्म यू फिल, वो सारी की वैल्यू पेयर्स में जाती हैं HTML सेंड सेट। ठीक है, सो वो आपको नहीं करना पड़ता, राइट? यू ऑलरेडी इज बीइंग डन बाय HTML, टेकन केयर बाय HTML। रिएक्ट ऑन द अदर हैंड सेज कि ठीक है, अभी तक तो ठीक था, लाइक वट एवर बी द HTML थिंग, बट ये HTML तो लिख नहीं रहे हैं, ये HTML जैसा दिख रहा है। ठीक है, सो आई रिपीटेड अगेन, ये HTML नहीं, इट मीन्स थोड़ी हैंडलिंग है। अगर जावास्क्रिप्ट ही है तो वी कैन पुट सम चेक्स ओवर हियर। चेक्स मतलब कि हम कोई चेक्स भी लगा सकते हैं इनपुट। कैसे करेंगे? वैल्यू फील्ड वी ऑलरेडी हैव, HTML में भी है वैल्यू फील्ड, यहाँ पर भी वैल्यू फील्ड है। ठीक है, ऑन चेंज HTML में भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ऑन चेंज भी यहाँ है, यहाँ पे, और वहाँ तो है ही। ऑन चेंज पे लेट्स सेट अ फंक्शन, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं, सेट हेडिंग। ठीक है, सेट हेडिंग नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा विल सी। और इसकी वैल्यू होगी हेडिंग। ठीक है, जो कि इनिशियल वैल्यू है, यू सी दिस। और यू कैन से यूजर हेडिंग। ठीक है, आप यूजर हेडिंग लेते हो। अब ये यूजर हेडिंग कहाँ से आई? यू कैन हैव दिस यूजर हेडिंग ओवर हियर। ठीक है, जो कि इनिशियली होगा एम्प्टी, एंड दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर हेडिंग से आपको यूजर हेडिंग मिल जाएगा। ओके, सो ये तो होगी आपकी वैल्यू। ऑन चेंज पे आप हेडिंग चेंज करोगे। ठीक है, ऑन चेंज पे आप इनपुट की वैल्यू चेंज करोगे। ठीक है, सो यू विल से सेट हेडिंग। रिमेंबर, रिमेंबर व्हेन वी लर्न अबाउट क्लासेस, तो हमने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा था, बिकॉज नाउ दिस सेट हेडिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। ठीक है, ये दिस डॉट सेट हेडिंग है या फिर ऐप डॉट सेट हेडिंग है, एक ही बात है। यू हैव टू राइट दिस डॉट सेट हेडिंग। Okay, so this is a property of class. The point is कि this on change will receive a event, और इस event के base पे I can say user heading is equals to event dot target, target dot value, event dot target dot value. Says user heading is not defined, very correct, user heading defined नहीं है, so this dot state dot user heading। भी ठीक है, सो स्टेट डॉट यूजर हेडिंग। सो जैसे ही यूजर ने कुछ इनपुट दिया, वी कैन जस्ट एक्सेप्ट दिस। वी आर गेटिंग अ वार्निंग। ठीक है, इसको देखते हैं, डू नॉट म्यूटेट स्टेट डायरेक्टली, यूज सेट स्टेट। इसको देखते हैं व्हाई इट इज सेइंग डू नॉट म्यूटेट। बट इफ आई कम ओवर हियर, आई हैव थिंग्स एट दिस पॉइंट, राइट? आई कैन से द okay, so I have this input. Now I'm trying to type something, but I'm not able to type. The problem is, I forgot one thing. I'm treating this input similar to HTML input, जबकि ऐसा है नहीं. Although, if I try to do without this, let's check it out the behavior. अगर मैं इसके बिना कुछ टाइप करता हूँ तो इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट द पॉइंट इज कि फिर यहाँ से मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी? दैट इज वन इशू। सो आई हैव टू पुट दिस समथिंग दिस। ओके, सो यू से सर दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर हेडिंग तो चेंज कर ही रहे हैं, तो ये भी चेंज होनी चाहिए थी। जब यहाँ पे मैं ऑन चेंज मैंने लगाया है तो हर क्लिक पे, हर टाइप पे ये भी चेंज होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर दिक्कत कहाँ है? द प्रॉब्लम इज कि स्टेट कैन नॉट बी सेट लाइक दिस, क्योंकि स्टेट एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, तो उसके सेट करने के तरीके भी थोड़े डिफरेंट हैं। इस तरीके से स्टेट हम चेंज नहीं करते हैं। यानी कि स्टेट चेंज करना मतलब पेज
की कंपोनेंट को अपडेट करना, तो वो आप डायरेक्टली वेरिएबल असाइन करके नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? So for a state, we have something called as this dot set state. So there is a method we call set state, और ये एक नया ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। So event dot target dot value. Yeah, so this is what we have. So we are setting the state user heading. ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट में मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने का मतलब ये कुछ ऐसे मर्ज होगा। ठीक है, सो कैसे मर्ज हो जाएगा, तो अगर यूजर हेडिंग होगी इसके अंदर तो वो पिछले यूजर हेडिंग को रिप्लेस कर देगी। तो इनपुट की वैल्यू है ये, जो कि एक स्टेट है। अगर स्टेट चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी। और स्टेट कैसे चेंज होगा? ऑन चेंज इवेंट लिसनर की हेल्प से स्टेट चेंज होगा, जो कि इस वैल्यू को चेंज करेगा। इसका मतलब कि मैं डायरेक्टली इनपुट चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट की हेल्प से इस इनपुट को चेंज कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये तो डायरेक्टली इनपुट से भी कर सकते थे। सो इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इफ़ यू विजिट सम वेबसाइट, आप देखोगे कि उनके इनपुट पे चेक लगे हुए हैं। व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग समथिंग, लेट से आप यूज़र नेम टाइप कर रहे हो, तो गूगल में यूज़र नेम आप टाइप करने गए, एंड गूगल सेज टू यू दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। यानी कि हर ऑन चेंज पे वो एक एपीआई कॉल कर रहा है और चेक कर ले रहा है कि ये यूज़र नेम टेकन है कि नहीं। सो दैट इज समथिंग इन टोटल कंट्रोल। तो इनपुट जो है ना वो पूरा कंट्रोल्ड इनपुट है। ठीक है, तो इसीलिए हम रिएक्ट की हेल्प से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी मैं ये इनपुट में कुछ चेंज करने जाता हूँ, तो इससे पहले यहाँ इनपुट की वैल्यू चेंज हो, उससे पहले मुझे इस फंक्शन में वैल्यू मिल जाती है। हाँ, इसकी हेल्प से मैं ये चेक कर सकता हूँ। लेट्स से यूज़र नेम टाइप कर रहे हो आप, मैंने इवेंट डिटेक्ट कर लिया, मैं सीधे एपीआई कॉल करूँगा कि इफ़ दिस यूज़र नेम एग्जिस्ट और नॉट। नहीं एग्जिस्ट होगी तो मैं तुरंत रेड रेड बॉक्स, या फिर एग्जिस्ट करेगी तो ग्रीन बॉक्स दिखा दूँगा। इफ़ इट इज़ ट्रू, जो कि हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, वेरी लाइक वी आर डूइंग वेरी सिंपल वर्क, हम डायरेक्टली सेट कर दे रहे हैं यूज़र हेडिंग को, और ये चीज़ यहाँ पे वैल्यू में सेट हो जा रही है। अब ये वर्क करेगी कि नहीं, देखते हैं। लेट्स सी, नाउ इट इज़ वर्किंग। ठीक है, अब ये वर्क कर रही है, बट ये पहले जैसा इनपुट नहीं रहा। इसको रिएक्ट में बोलते हैं कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। वी वुड बी हैविंग, you see this uncontrolled component over here। ठीक है, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तो इसी को हम कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। नाउ वी वर नॉट एबल टू चेंज दिस हेडिंग, तो इस हेडिंग को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, आई विल मेक दिस एज यूजर हेडिंग। ठीक है, अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? स्टेट का फ़ायदा क्या है? अभी देखते हैं स्टेट का क्या फ़ायदा है। नाउ आई कैन से this is a custom heading। Are you guys getting the point? क्या हो रहा है यहाँ पे? See this div। ठीक है, ये कैसे चेंज होगा उसको देखते हैं। You see this? It seems like ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू स्टेट। ठीक है, सो स्टेट, वी कॉल दिस एज स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको रिएक्ट में। विल डिस्कस मोर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। सो वी हैव कवर्ड जेसिक्स, रेंडरिंग कवर करी हमने, कंपोनेंट्स कवर करा, प्रॉप्स नहीं कवर करा, स्टेट हमने कवर करा, लाइफ साइकिल हमने कवर करा है। ठीक है, एडिंग लाइफ साइकिल मेथड्स, अच्छा ये मेथड्स भी हैं। ठीक है, इनको भी कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो द होल आइडिया इज टू ब्रिंग व्हाट टू से, लाइक डायनामिकनेस इन आवर वेब पेज। ठीक है,
I will share the attendance sheet with you guys. Where is it? Exactly. Okay. So we had our today's class. We have 13, 7, and 20. Hey, please mark your attendance and let's meet day after tomorrow. Okay. Revise the topic. Go through the links. If you have any doubt, please feel free to ask. Next class will be starting with we'll be talking more about props, okay? And we'll be starting with functional component and the application we are going to build. Okay, thank you guys. Bye. Hello.